post Diwali, this is the festival Dhamaka. The festival Dhamaka is about art, architecture, and design. Indians for centuries have been the most creative people on this planet, and yet we've not really learned to sell our products. We were always busy working at the craft, and others were selling our products. Now, I think it's time that, as part of the government, we try and encourage people who can also sell their craft and showcase it right, exhibit it right. And for this reason, we've started this Binale. This is going to be the first ever edition by Government of India. There are several Biennales which have started across the globe. Venice, of course, is one of the most famous ones. But in addition to Venice, there is Sao Paulo, which is happening, Berlin, Dubai, and there are always cultural spaces which are there, and every city needs to have creative space, and those spaces need to be occupied by people. Delhi, for example, or all the other 5 metros have various spaces, but unfortunately the crowd pulling is not happening the way it should happen. So there's a certain amount of sensitization program also for the public at large, and that sensitization will go a long way in protecting our heritage and creative spaces. Binale is going to offer creative spaces to creative people. As of now, through crowdsourcing, we've got 560 inquiries. 260 artists have applied, and out of which the creative artworks which have been selected exceed 260, because each artist would have submitted more than one. And in addition to this, 150 artists or so have been shortlisted by the team. And there are 7 days. The program runs in 7 days, and there are 7 themes for 7 days. One of my favorite one is doors, gates, and cities. And why I would say this is interesting, that we all look at cities being overcrowded, too occupied, too many people. But the theme of doors and gates, doors and windows, is something which I feel doors is outward looking, and door is inward looking, and windows are outward looking. So both outward and inward interaction that happens in the cities is the way forward, and thus most of the cities in old times used to have gates and gated community, so that people could protect, people could conserve and savor their art forms. That is one. Then there's another which is called, this is called Pravesh, rites of passage. So every city would tax you to go in and come out and carry the traditions forward. So there's a historicity attached to this particular scene. The second is Bage Bahar. Now you would recognize the fact that, of course, the curated gardens of Europe are much talked about, but India has a history of gardens, and history as in temples, palaces, much before medieval times and much beyond 400-500 years. The gardens which were severed by Indian civilization is something to talk about. So again, historical perspective with the modern curated gardens, and thus Bage Bahar, and that engulfs mythology, belief system, so on and so forth, which is a conversation around gardens. Samprava, and Samprava is confluence of Samprava. You can follow it from the Sanskrit or the Hindi word Prava, of everything, Prava of every thought, Sangam, confluence of various aspects. So communities come together and discuss their contribution in art, culture and climate ecosystems. Then Satpate, which is anti-fragile algorithm. We all know that how, in spite of challenges, the ancient architecture of India has existed even till date. So city planning from Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga and several other cities
across the country have survived in one form or the other, and many have survived on top of the earlier existing civilization. Purana Killa, for example, being part of Delhi, but Indraprastha existed at this very spot for many, many earlier times. And Satpatya is basically that algorithm which is talking about structures which have stayed beyond their times. And let's talk about these structures. Uh, and it's a cultural portal. Then Vismay, as we all understand, crossovers. There's a myth associated with it. There is a entrapment associated with it, and this is modern and post-independent architecture. Deshaj is Bharat Designs, which is contemporary face of indigenous art and design traditions of India. And this is also important that post-independence and little before independence and even contemporary, day to day, they are beautiful architectural buildings. If we do not secure them, they are beautiful pieces of art and craft. If we do not secure them, this very contemporary art and artistic form will become uh, uh, antiquated at some point in time. So history needs to be preserved, even present history needs to be preserved. For that purpose, Deshaj becomes important. And Samatva is shaping the build, which means the social design collaborations, and this is also a cultural portal. There are going to be several keynote speakers, experts in their respective fields. I'm not going into the detail. Many countries have sent their entries. Mostly are coming from US, Italy, and Netherlands and other places. There are panel discussions on art, architecture, and design. There are workshops, and very interesting workshops which are curated thematically: Khavad, Ekebana, Kintsugi, Tanjore, Origami, Gond, Bhil, Madhubani. So these are, I wish a whole lot of us can join these workshops and sharpen our creative talents. And there are going to be open calls for artists for submitting their exhibition. There's going to be also student binale. Many art and craft students, this is called Samunati, Samunnati, which is Barabar Ka Unnati or Barabar Se Unnati. So even students get an exposure at an early age, how to participate, curate their work, and also get an international exposure for developing their art and exhibit forms. Again, this will also involve dialogues, discussion, and conference. Public art aiming to enrich communities. So we are going to identify who have contributed to community living, and thus start a foundation India and Memeraki. Art Bazaar, there can be no Binale without the bazaar, so there are going to be art bazaar. Small, big businesses can interact with each other for selling their merchandise, and others who can participate in purchasing the merchandise. And there's going to be business to business space, and there's going to be a general public space for this particular art bazaar. And Atmanirbhar Bharat Center for Design, this is an initiative facilitating Indian design and innovation, celebrating the rich, diverse handicrafts of India. Each of these 7 days and 7 themes are curated by some very, very eminent architects and design curators. Each is curated by a different person. For example, Pravesh is being curated by Aditya Arya. If any of you who's familiar with Gurgaon would have seen this Museo Camera Museum Center in Haryana, he's the one who's curating this particular theme, Pravesh, Rites of Passage. Bage Bahar, as I talked earlier, is being curated by Anchita Nair, who's CEO of Kutur. And then Samprava is being curated by Ritesh Nanda, famous Aga Khan Foundation. Then Sthapatya is being curated by Amit Pasricha.
And this also is very, very interesting because he's someone who's founder of India Lost and Found. I think the very theme of Binale is India Lost and Found, because India, in true sense, never got lost. It continued working silently, but lost in public eye, and thus focusing on exhibiting our strength is what where we feel the contribution of media and friends from the media will go a long way in sensitizing people and taking the theme forward. So India lost in public perception, it was always there, and we are trying to find it back in the greater imaginary of people, both within and outside the country. Vismay is being curated by Shikha Jain, who's the founder of Drona, and then Desaj is being curated by Anubhav Nath, founder of Ojas Arts. Then Samatva is being curated by Swati Janu. This is for the in terms of fact sheet. अभी जो कुछ मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया वो भारत सरकार ने खास तौर पे संस्कृति मंत्रालय ने पहली शुरुआत की है एक डिजाइन आर्किटेक्ट और बिनाले की, और वो पहली शुरुआत इसलिए है कि दुनिया भर में विभिन्न देशों के अंदर बिनाले होते हैं। वेनिस बहुत प्रमुख है, अभी जेदा में शुरू हो रहा है, साओ पोलो में हो रहा है, और दुबई में है, बर्लिन में है, तमाम देश जो है उनमें बिनाले है। हमारी एक प्रयास है कि जो सांस्कृतिक या कल्चर डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाने का, कि देश भर का जो आर्ट आर्किटेक्चर है वो अन्य स्थानों पर पार्टिसिपेट करे और देश दुनिया के जो लोग हैं वो भारत में आकर भारत की जो डिजाइन आर्ट आर्किटेक्चर की शैली है उससे परिचित हो। और जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने हर चैलेंज के बाद, हर मुश्किल के बावजूद अपनी आर्ट फॉर्म को जीवित रखा है, और उसको जिन्होंने जीवित रखा उन सबको रिकग्निशन देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तकरीबन 560 हमारे पास इंक्वायरी आई है और 260 के आसपास जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपने सबमिशन जो है भारत सरकार को सबमिट किए हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक जो टीम है उसने 150 के आसपास आर्टिस्ट को चुना है और 260 से ऊपर कलाकृतियों को चुना है। 7 दिन 7 अलग अलग थीम और अलग अलग 7 विचार, और साथ ही इसके एग्जीबिशन स्पेसेस होंगे। इसमें एक जो है उसका नाम प्रवेश है एक थीम का, दूसरा नाम बागे बहार है, संप्रवाह है, स्थापत्य है, विस्मय है, देशज है और समत्व है। और इसमें जो छात्र हैं उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। विभिन्न जो विषय है उनके ऊपर जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आके डिस्कस करेंगे। और भारत का जो एक डिप्लोमेटिक कॉर्नर है आर्ट और क्राफ्ट और कल्चर का, उसको हमने दुनिया भर में पहुंचाने का जो है वो एक ये प्रयास है, और इस प्रयास में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि एक क्यूरेटर जो है वो फाउंडर है एक अपनी फाउंडेशन के जिसका नाम है इंडिया लॉस्ट एंड फाउंड। मुझे लगता है कि इस बिनाले के प्रयास के पीछे यही प्रयास है कि जो भारत खोया तो नहीं था लेकिन कहीं छुप गया था, और जो धूल हमारे आर्ट के प्रति एक तरीके से कहना चाहिए निग्लेक्ट आया है, उसको दूर करने के लिए और वापस उसकी जो चमक है वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये एक प्रयास है, जिसमें जो विभिन्न आर्टिस्ट जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं आजकल भी जिन्होंने काम किया है, हमारा एक इतिहास है, उस इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो काम है कि पूरे देश दुनिया में लोगों की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़े, और हर शहर के अंदर हर मेट्रो में दुनिया भर में क्रिएटिव स्पेसेस होते हैं, और उन क्रिएटिव स्पेसेस की वजह से वो शहर जाना जाता है। अधिक से अधिक लोग इन क्रिएटिव स्पेसेस में पहुंचे, म्यूजियम्स, गैलरीज,
उनके स्थान हो जहां वो चाय पीने के लिए या रविवार छुट्टी मनाने के लिए, शनिवार वीकेंड्स पे घूमने के लिए, बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए, विभिन्न आर्टिस्ट जो अपनी, हर व्यक्ति के अंदर आर्ट छुपा है, अगर कोई वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, वीकेंड वर्कशॉप जाना चाहता है, घंटे 2 घंटे देना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए भी वो जगह उपलब्ध हो। हम लोगों का प्रयास है कि इस एक ये माध्यम बने पूरे देश दुनिया के आर्ट कलाकृतियों को और दुनिया को जोड़ने का, और जो भारत की परंपराएं हैं उससे सब अवगत हो। और प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, तो अब जब भारत विकास की तरफ बढ़ चुका है तो अपनी विरासत को ना भूले और नए तौर तरीके जो विकास के हैं उन सब तौर तरीकों को इस्तेमाल करते हुए विरासत को जीवित रखने हुए और आगे बढ़ने का ये हमारा छोटा सा प्रयास है। और इस प्रयास में आप सब भागीदार बने, हमारे साथ जुड़े और हमारे विचारों को और ऐसे तमाम आर्टिस्ट को देश दुनिया में ले जाने का काम करें। इसी के साथ आपका आभार, धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न है तो मैं लेना चाहूंगी। कॉर्नर आप बनाएंगे क्या? वो कॉर्नर तो है ही इन सब, वो है, वो सारा कॉर्नर है जी, वो कॉर्नर भी है। और वो अभी आपको मुग्धा जी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, मुझे कहीं और पहुंचना है इसलिए मैंने अपना ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें इंस्टॉलेशन भी रहेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, इंस्टॉलेशन भी रहेंगे। जी जी जी। अच्छा, पहले ये मैंने त्रिनाले होता था तो उसको वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर ये बिनाले क्यों शुरू हुई हम जानना चाहते थे। देखिए, बहुत सारे प्राइवेट लोग कुछ कुछ चीजें शुरू करते हैं और वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल ड्रिवन होती हैं। तो इंडिविजुअल जब तक है, जब तक उनका इंटरेस्ट है या शरीर काम कर रहा है, तब तक वो चीजें रहती हैं। लेकिन अब हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके सरकारी तौर पे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, ललित कला अकादमी एक एकेडमी है भारत सरकार के नीचे, लेकिन अब संस्कृति मंत्रालय कर रहा है जिसमें ललित कला अकादमी की भी भागीदारी रहने वाली है। तो आप उसका स्केल और तरीका थोड़ा सा भिन्न हुआ है। एक सवाल और है कि घर की डेहरी से किले की प्राचीर तक जो निकल करके आ रहा है, क्या खोया क्या पाया, ये भी है। बादलों की ओट में सब कुछ छिप गया था जी, उसको निकाल रहे हैं। लेकिन आज जो है परिवार को इसमें किसी तरह से जोड़ा गया है। कोई ऐसे परिवार भी रखे गए हैं जो कला के प्रति समर्पित हैं, कोई परिवार ऐसे जो क्योंकि घरों की डेहरी से ही सारा काम आरंभ हो रहा है। नहीं, वो शुरुआत हो रही कला की, देखिए, और वो बढ़ती चली गई यहाँ तक। आपने बहुत अपने प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो परंपराएं जीवित रही इस देश में, वो पेट्रन्स के अभाव में भी जीवित रही, क्योंकि बहुत सारे परिवारों का सहयोग रहा और ऐसे बहुत सारे मास्टर्स, गुरु रहे जिन्होंने इस कला को आगे बढ़ाया। और उस परिवार में केवल बहन, भाई, बेटा, बेटी ही नहीं, बल्कि उनके जो छात्र हैं वो भी परिवार का ही हिस्सा हैं। गुरु शिष्य परंपरा इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है। तो ऐसे तमाम लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अब वो आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा। Absolutely. Everybody should and must rush to see the finale, and that's where I need your support and your help, because the more you publicize it, the more people get to understand it, the more people come there. It will create creative spaces in the cities. It will sensitize people. It will also help us build the institution of culture which this country is very, very rich in. I understand, because we are also creative minded. Ji, ji. Thank you. Anybody else? The School of Planning and Architecture and other architects coming there? Absolutely. In fact, there is a special theme, women architects. So at times we feel that women in the cultural spaces sometimes get lost and they are overwhelmed by the presence of men in the workspace. But the contribution of women in architecture is uncanny. In fact, I have
I have a very biased opinion and I'm saying it publicly. And the bias is that I wish more women are the city planners. Because if city planning is ensured by women, safety, security, toilets, which way the face of the toilet should be, these are sensitive subjects which will be better reflected. So I want more women to be part of the city planning architecture. I'm biased. But I thought I will express myself. Anybody else? मैम इधर से Yes, ma'am. मैम मैं कविता जोशी हूँ जनसत्ता न्यूज़पेपर से। जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 9 दिसंबर को इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं? और इसके अलावा मैम आपने जो कहा कि 150 आर्टिस्ट को जो आपने सेलेक्ट किया है, क्या ये केवल इंडियन आर्टिस्ट हैं या फिर इंटरनेशनल आर्टिस्ट? इंटरनेशनल कुछ लोग जो उनकी एम्बेसीज और उनका देश भेजेगा, उसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं पढ़ सकते. वो रिप्रेजेंटेशन होती है जो भी देश अपना भेजना चाहे. लेकिन जो क्योंकि हमारे पास 560 एंट्रीज थी, तो 560 में से जब हमको चुनना है तो स्पेस का ध्यान रखते हुए और क्वालिटी वगैरह का, तो एक पूरी टीम है, एक पूरी कमेटी है, उन्होंने 150 लोगों को चुना है. Yes, ma'am. So I just wanted to know about the choice of the venue. What were some of the considerations for choosing Red Fort? Were there some other venues that you were considering? So the idea behind was to create culture spaces and utilize the existing culture spaces, which will showcase the background. Say especially if we talk about Delhi, for example. Delhi has certain spaces which are traditionally the culture space, and we know whether it's freedom movement, pre-freedom movement, Mughal period, before Mughal period, Red Fort is a huge space, and that huge space, unless utilized, will go into disuse also. We want more and more such spaces to be used. And for your information, recently right next to Qutub Minar, we have worked, I mean, we not as Ministry of Culture but as a local MP representing my constituency and Delhi also, worked with the Lieutenant Governor, and we've created a space which was lying in disuse, which is the park area, which is called Qutub area. And the idea behind is to keep the culture spaces alive and bring the history of the city forward. Now people know about Qutub Minar in a way which may not be 100% accurate, but there's huge history much before Qutub Minar and much beyond Qutub Minar, which people need to understand and know, and much after it. So there are spaces, there is history which people have to be sensitive towards, and these are spaces and bits of history which we want people of city and the world to associate themselves with. I have one question. One, sir? Yeah. Just wanted to understand that the Kochi Binale also exists already. The Kochi Muziris Binale has been already in place for several years now, and it has been supported by the state government. Why is it that the Culture Ministry is not supporting that and maybe taking it to a bigger scale rather than doing something of its own over here? And the second question is, will this be a traveling Binale? Will it remain in Delhi or will it also move to other locations in the years to come? So far as Kochi Binale is concerned, I don't want to comment on anybody else, but I would say that many attempts are made. The scale and the credibility what Government of India can offer, I don't think anybody else offers, and especially there have been issues with all kind of things. I don't want to get into that debate at all, but to put it in the right perspective, if Government of India is getting involved in a project, it brings the scale and credibility which this country and people require it. So there's a gap, and we are trying to fill that gap which others have not succeeded to fulfill. पहली महिला आर्किटेक्ट रुमिला चौधरी का ये 100वां साल है. ये चंडीगढ़ में एक बड़ा फंक्शन हुआ है ली कॉर्बूजियर के साथ
वो चंडीगढ़ के प्लानिंग में वो भी शामिल थी, उनके जी। सहयोगी थी वो, उनका 1.25 साल है, उर्मिला चौधरी नाम था, यूपी की थी वो, जी। तो उनके बारे में भी कुछ हो तो अच्छा रहेगा। नहीं, हम आप उर्मिला वो चौधरी इसका हिस्सा इसीलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन आर्किटेक्ट्स को। नहीं, उनको भी शामिल अरे कर लीजिए। अरे उनका 100 साल। वो शुरुआत उन्होंने की, उनके बाद बहुत बड़ी लाइन है जिनके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है। उर्मिला चौधरी को इसीलिए हमने ये विषय भी रखा है। 96 ईयर्स की शीला जी भी हैं, शीला हाँ चौहान जी, वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब के लिए ये हमारे पास वो ये दिखाएंगी आपको मुग्धा जी, ये पूरी डिटेल है, इस पे पूरा रिसर्च है, पूरा काम हुआ है। और आप सबसे सहयोग की उम्मीद मैं करती हूँ कि ये अधिक से अधिक लोग शामिल हों, क्योंकि कल्चर कनेक्ट्स, ये हम सब जानते हैं, संस्कृति को, धरोहर को आगे लेकर जब हम बढ़ते हैं, जो भेदभाव का स्पेस है वो खत्म हो जाता है और सबके चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी आ जाती है। तो भारत की जो परंपराएं हैं, और भारत मैं कहती हूँ वो आइलैंड इसीलिए है क्योंकि हर मुश्किल के बावजूद हम लोगों ने मुस्कुराना सीखा और पॉजिटिव काम करना सीखा, ये हमारी खासियत है। I can take a question. Ma'am, the sound and light show which goes on at the Red Fort, so that is a big, it portrays Indian culture. So this event and that event, are you going to merge? No, that is an ongoing process. No, but then people who are coming for this event. No, they can come. I mean, we are not stopping what's going on. This is additional. Okay. We are not stopping. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।